HCF of 4 and 3 is 1. 1. Highest common factor between 4 and 3 is 1. ठीक है. ओके काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राई किए थे लास्ट टाइम पे. लाइक क्वेश्चन है दिस A रेशियो B रेशियो C is 1/4 ratio 3/5 ratio 5/8. Express this ratio in its simplest form. So who can explain this question? Basically this ratio is in its fractional form and we have to convert this fraction into like integral form, integer form. So can I? Okay, Anushka. Yes, sir. So first we should find LCM of denominators. Then LCM of denominator will be 40. So Then we should LCM, multiply LCM by all the fractions. okay, so 1/4 into 40, 3/5 into 40 and 5/8 into 40. This will be 25, this will be 24 and this is just 10. 10. So 10 ratio 24 ratio into 25, correct? Now this question. So who will explain this question? A ratio B ratio C is this 1/4 ratio 1/3 ratio 1/2 and total amount है this 780. We have to find out the individuals amount. Ojas, can you explain this question? Harshita, can you explain this question? Anyone who can explain this question? Anushka, will you explain? Yes, sir. So first, as we did at first, we should take LCM of denominator and multiply it. Then we'll get numeral ratio. So ratio is finally 3 ratio 4 ratio 6. अच्छा एक पॉइंट और लाइक यहाँ पे रेशियो है 3 ratio 4 ratio 6. So greatest amount will be of A or B or C? C. C definitely because इसका रेशियो सबसे ज्यादा है यहाँ पे. ठीक है. Then next step. Then we should take each ratio numeral and divide it by the total sum and multiply it by amount. हाँ like ratio of A total ratio into total Amount. individual ratio upon total ratio into total amount. Like amount of B will be amount of A will be 3. individual ratio yani ratio of A upon total ratio is 6 plus 4 plus 3 yani 13 into total amount which is 780. So this is 60 into 3 yani 180, correct? Amount of B will be ratio of B upon total ratio into total amount. Similarly amount of C will be individual ratio yani 6 upon total ratio which is 13 into total amount which is 780. So final answer is 60 into 6 यानी 360, करेक्ट है. ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन कर सकता है? दिस क्वेश्चन triangle ABC, this side is 12, this side is 18, BC is 24 and we have to find out side of BD या length of BD where AD is angle bisector of angle A. लिटरली आप इस क्वेश्चन को करेक्ट एक्सप्लेन करते हो तो मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूं आपको. We have to find out this length BD. AB is given as 12, AC is given as 18, BC is 24, AD is angle bisector. We have to find out the value of BD या length BD.
Vidit, can you explain this question? ओके, सो ईडी इज एंगल बाइसेक्टर, और ये प्रॉपर्टी आपको लास्ट टाइम में बताया था कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो ऑफ in the same ratio of consecutive sides. यानी BD upon DC is equal to AB upon AC. AC. BD upon DC is equal to AB upon AC. Similarly, in this question, BD upon DC is equal to AB upon AC. AB is 12, AC is 18. 12 ratio 18 is 2 ratio 3. So basically BD ratio DC is 2 ratio 3 and total amount है 24. Clearly BD will be ratio individual ratio upon total ratio into total amount. यानी 2 upon 5 into 24, 48 upon 5, which will be 9.6. 6. Remaining DC वो easily calculate कर सकते हैं. 24 minus 9.6, which will be this 14.4. करेक्ट है. नेक्स्ट फिर काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किए थे. देन दिस क्वेश्चन 2a is equal to 3b is equal to 4c. We have to find out the value of a ratio b ratio c. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है आपको इक्वल, आप इसको पुट करते हो इक्वल्स टू k. Clearly a is equal to K upon 2. b is equal to k upon 3, c is equal to k upon 4. Now we have to determine a ratio b ratio c, which is k upon 2, k upon 3, k upon 4. K cancel. Again same procedure, 2, 3, 4. LCM will be 12. multiplying 6 ratio 4 ratio 3. correct. Similarly this question again काफी सारे terms equal is equal to k. A is equal to 2k upon 3, b is equal to 3k upon 4. c is equal to 4k upon 5, d is equal to 5k upon 6. Now we have to determine a ratio b ratio c ratio d. Important point is ratio वाले questions में थोड़ा order carefully देखना चाहिए. Like suppose करो question होता है this, like d ratio b ratio c ratio a, then final answer should be 50 ratio 45 ratio 48 ratio 40. यहाँ पे क्वेश्चन है a रेशो b रेशो c रेशो d, 2k upon 3 रेशो 3k upon 4 रेशो 4k upon 5 रेशो 5k upon 6. k cancel. Again same procedure, LCM of 3 4 5 6 will be 60. 20 times cancel, 20 into 2 40. 15 times cancel, 15 into 3 is 45. 12 times cancel, 12 into 4 is 48. 10 times cancel, 10 into 5 is 50. Then this question a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f is equal to 3 upon 2. ये already आपको given information है. Then we have to determine the value of this expression. Again same procedure, कुछ terms equal, आप इसको put करते हो k. So a upon b is equal to k, यानी a is equal to bk, c is equal to dk और e is equal to एक बार मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रेजेंट ही नहीं है शायद. अनुष्का प्रेजेंट हो यहाँ पे? Yes, sir. आर्किन? रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर मैं आपको रिमूव करता हूँ, क्योंकि आप प्रेजेंट भी नहीं हो यहाँ पे और रैंडमली ये नाम शो कर रहा है. ठीक है, ओके फिर से स्टार्ट करते हैं. अनुष्का? Yes, sir. रुद्र? Yes, sir. आर्किन? Yes, sir. आर्निश? Yes, sir. दिविजा? Yes, sir. हर्षिता? Yes, sir. ओजस? Yes, sir. संस्कार? Yes, sir. सोहम?
So I'm sorry, but I have to remove here, है ना? ऐसे reply नहीं करते हो तो फिर. Varda, Yes, sir. okay, and Vidit. Sir is not connected to audio. Okay, can you explain this question? So this equals to k. We have to find out the value of this expression. A is equal to bk, c, dk, e, f, k. अब क्या करते हो आप? ये values यहाँ पे वापस से put करते हो. So basically a, bk, c, dk, e, f, k. यहाँ पर common is clearly k. Remaining portion 2b minus 3d plus 4F. 4f. Denominator and numerator exactly same. So cancellation. Remaining है only k and k is. 3 3 by upon 2. 2. So final answer is. 3 upon 2. 3 upon 2. अच्छा, वन मोर थिंग, ऐसे कैंसिलेशन नहीं होता लाइक 2b 2b 3d 3d 4f 4f. ये कंप्लीट एक्सप्रेशन कैंसिल है यहाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. सो हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? Sir, I had one question in the previous problem. Again same procedure. A upon b is equal to c upon d is equal to e upon f. This information or these terms are given equal and equals to 3 upon 2, which is let's say k या फिर t, जो भी है तुम्हारा कोई फेवरेट अल्फाबेट है वो भी यूज कर सकते हो. और अभी आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. So a upon b is equal to k, c upon d is equal to k, e upon f is equal to k, a is equal to pk, c is equal to dk, e is equal to fk. Okay. Now substitute these values in this expression. A square is b square, K square. c square is d square, K square. e square is f square, k square. Clearly k square common. Remaining है 99 b square minus 100 d square plus 101 f square, and that cancelled. Remaining है just K square. k is 3 upon 2, so k square is. 9 upon 9 4. upon 4. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखने में ये क्वेश्चन काफी थोड़ा टफ फील होता है, लेकिन ये है नहीं टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. Sir, हाँ बोलो. sir, like k square is equal to 3 upon 2. So then k will be root 3 upon 2, right? बेटा 3 upon 2 is k, not k square. हाँ, okay. If 3 upon 2 is equal to k square, then k will be, जो तुम बोल रहे हो वो root 3 upon 2, लेकिन 3 upon 2 is k, not k square. Yes, sir. हाँ. Then this question. A upon b, c upon d, e upon f, and this. ये बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन. ठीक है, ये सब इक्वल है. And we have to determine the value of x. Again same procedure. This equal to K. a b k c d k e f k. ये values आप यहाँ पे put करोगे, substitute करोगे. a cube is b cube, K cube. c cube is d cube, k cube, e cube is f cube, K cube. k cube common. Remaining 2b cube minus 3d cube plus 5f cube. Denominator is exactly same. Numerator denominator cancelled. Remaining है just K cube. whole power. X. So this is k to the power 1. 3a. 3x, and this is just k. K to the power 3x is equal to k. K का मतलब k to the power 1. So base same, index also same. 3x is equal to 1. X is equal to 1 by 3. upon 3. 1 upon 3. Correct है. ठीक है, तो यहाँ तक लास्ट टर्म तक हम लोगों ने गो थ्रू किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ये ट्राई करो, आंसर चैट बॉक्स करना है, देखते कौन रिप्लाई करता है. लाइक क्वेश्चन है दिस. 3a is equal to 4b, then find the value of this expression.
3a is equal to 4b. So a upon b is 4 upon 3. 4 upon 3. a is like 4k and b is like 3k. 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 Multiple of 4, multiple of 3. Now substitute these values in this required expression. So 3 times 4k yani 12k minus 4 times 3k again 12k. 12k. 12k minus 12k, clearly answer is 0. 0. क्वेश्चन Zero. थोड़ा चेंज करते हैं. This is 3a minus 2b. Now 2b यानी 6k upon 2a 8k plus 5b यानी 15k. 12k minus 6k 6k, 8k plus 15k 23k. 23k. The final answer is 6 upon 23. 23. सर Final answer प्रीवियस is 6 क्वेश्चन का upon. आंसर 0 प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर 0. हाँ ठीक है. ओके, अब थोड़ा यार सिंसियरली समझना. एक न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं यहाँ पे. काफी इजी कंसेप्ट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एंड कंसेप्ट इज दिस: कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो एंड dividendo. What is componendo and dividendo? If a upon b is equal to c upon d. If a upon b is equal to C c upon D. upon d, like 18 upon 12 is equal to 30 upon 20. 18 upon 12 cancellation by 6 3 times 2 times. Cancellation by 10 3 times 2 times. 3 upon 2 is equal to 3 upon 2. ठीक है. If a upon b is equal to c upon d या फिर a, b, c, d are numbers such that a upon b is equal to c upon d, then ये इसका रिजल्ट होता है. इसका प्रूफ क्या है वो देखेंगे, लेकिन पहले समझने का ट्राई करो. a plus b upon a minus b, like this number will be used in numerator as well as in denominator, and this number which is present in denominator, ये आपको करना होता है न्यूमरेटर में प्लस एंड डिनोमिनेटर में माइनस. a plus b upon a minus b is equal to same pattern on the right side यानी c plus d upon C minus D. c minus d. इसके लिए कंडीशन ये है कि a upon b should be equal to c upon d. C Then minus a D. plus b upon a minus b is equal to c plus d upon C c minus minus D. d. ठीक है. ये 3 upon 2 था. 3 upon 2 का मतलब होता है 1.5. इसको वेरीफाई कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू c एंड d, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ पे a plus b upon a minus b should be equal to c plus d upon A minus B. c C minus d. minus D. 18 plus 12, 30. 18 minus 12, 6. 30 plus 20, 50, and 30 minus 20, 10. 30 upon 6, 5. 50 upon 10 is also 5. 5 is equal to 5. Understood? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, काफी ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर. किन क्वेश्चंस में यूज होता है देखने वाले हम लोग अभी. ठीक है, बट ये पैटर्न माइंड में होना चाहिए. a upon b is equal to c upon d, then a plus b upon a minus b should be equal to या also equals to c plus d upon C c minus. minus D. एक पॉइंट और, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन सेम है. ये दोनों इंडिविजुअली इक्वल, ये दोनों इंडिविजुअली इक्वल. सपोज करो ये 100 आता है तो इसका 100 आना कंपलसरी नहीं होता. लाइक यहाँ पे दिस वैल्यू 1.5 एंड दिस वैल्यू 5. 1.5 not equals to 5.
but this 1.5, this is also 1.5, this 5, this is also 5, यानी ये दोनों आपस में इक्वल एंड these two also equals. Clear? Yes, sir. रिवर्स ऑब्जर्वेशन ये भी आपको आना चाहिए. Like if a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon, C minus D. then we can write what? A upon B is equal to C upon D. A upon b is equal to c upon d. Again observation क्या है? A should be present in numerator and denominator both. B in numerator plus and in denominator minus. Same pattern on the right side. CC plus D minus D. So ये जो common है ना, ये numerator में और ये plus D minus D, this should be present. This will be present in denominator. Similarly for left side AA, this A plus B minus B, denominator में B. तो if this, then this, or if this, then this. Clear? Yes, sir. Like this example. 3a plus 5b upon 3a minus 5b is equal to 3c plus 5d upon 3c minus 5d. Then find the value of AD upon BC. This is the question. Answer will be some numerical like 13 upon 15, or can be constant, can be integer also. Go try this question. What should be the next step? 3A upon 5B is equal to 3C upon 5D. Correct. 3a upon 5b is equal to 3c upon 5D. 5d. This is same as a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon. C minus D. Then we can easily write a upon b is equal to c upon d. Correct. 3 cancel. 5 is also cancelled. Next step is this: a upon b is equal to, C upon D. and now using cross multiplication, AD upon BC is equal to. 1. So 1 is the final answer. Any doubt? No, sir. अब इस हाँ। कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है ना, सपोज करो ये कंसेप्ट नहीं पता हम लोगों को, देन हमें केवल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा. मतलब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फिर कुछ ट्रांसपोजिशन वगैरह यूज करो, काफी सारे टर्म्स कैंसिलेशन वगैरह होंगे यहाँ पे, और फाइनली फिर आंसर आएगा दिस. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोजिशन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट दिस पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है आपको, और इजीली वन स्टेप में आंसर. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं. काफी सिंपल है. इंफॉर्मेशन गिवन है दिस: a upon b is equal to c upon d. C upon D. Like 5 is equal to 5, आप both side plus 1 करते हो, then also equal. 6 is equal to 6. So same step, a upon b plus 1 is equal to c upon d Plus 1. plus 1. Denominator is b, numerator is C plus D. c plus d. तो a plus b upon c plus d is equal to b upon D. d. This plus 1, ये एक्चुअली कंपोनेंडो बोलते हैं इसको.
जब आप +1 करते हो ना इक्वेशन में बोथ साइड या इक्वल साइन के बोथ साइड, that step is called as componendo. Okay. Next, -1. This step is called as dividend. dividendo. Does not implies division. Division जैसा नहीं होता है यहाँ पे. +1 करने को हम लोग बोलते हैं componendo, -1 करते हो तो इसको बोलते हैं dividendo. Okay. LCM B, numerator A minus B. LCM D, numerator. C minus D. Now using cross multiplication, A minus B upon C minus D is equal to B upon D. B upon D. Now this B upon D, this also B upon D, and both B upon D are Equal. equal. So clearly A plus B upon C plus D is equal to A minus B upon. C minus D. Now again using cross multiplication, A plus B upon A minus B. is equal to C plus D upon. C minus D. बस इतना ही प्रूफ करना था. अगेन इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं. Find the value of AD upon BC. Again, we are trying to use componendo and dividendo here. So we have to observe expression. We have to observe an expression which is same. इसमें कुछ करेक्शन करना चाहिए, I think. This is plus actually. Okay, so we have to observe an expression which is same in numerator and denominator. So on the left side, which is same in numerator and denominator? Sir, A, 2A. B, C and D. नहीं, 2A plus 3B. This is same, na? Yes, sir. So this will be like A. Now second expression which is in plus in numerator and in Four. minus in denominator. 4C plus 5D and 4C minus 5D. So this is like B. B. So this is A plus B upon A minus B. B. And on the right side, which will be C, capital C. मतलब ये C नहीं बोल रहा मैं, वो expression वाले C की बात कर रहा हूँ. 2A minus 2A minus 3B 3B. upon 2A 2A minus minus 3B. 3B. ये same है. And which should be D? 4C. 4C minus 5D and 4C plus 5D. Correct. 4C minus 5D. देखो यार, जब आप माइनस करते हो ना तो साइन विल गेट Changed. changed. This plus 4C will become minus 4C. This minus 5D will become plus 5D. 5D. So again same expression is available here. A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D. What should be the next step? Sir, A upon B is equal to C upon D. No need of cross multiplication if we can observe this type of expression या this type of pattern. इसका cross multiplication easy है क्या बोलो? नहीं. बिल्कुल Not easy नहीं है, terms काफी सारे टर्म्स मिलने वाले हैं. So A upon B यानी 2A plus 3B upon 4C plus 5D. is equal to C upon D यानी 2A minus 3B upon 4C minus. 5D. करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेप बोलो. Sir, Sir, हाँ बोलो. cross multiply. करेक्ट है. 2A plus 3B upon 2A minus 3B
सिमिलर टर्म्स को सेम साइड कर रहे हैं हम लोग, ए एंड बी लेफ्ट साइड, सी एंड डी Right side. 4c plus 5d upon 4c minus 5d. अभी what should be the next step? Cancellation. नहीं, कैंसिलेशन थोड़ी होता है, क्या कैंसिलेशन होगा यहाँ पे? हाँ नहीं. बेटा ऐसे कैंसिल नहीं होता, ऐसे कैंसिल नहीं होता. Yes. This is again in the form of a plus b upon A minus B. is equal to c plus d upon. C minus D. Next step, Sir, A upon B is equal to C upon D. what is a here? 2A. 2A, What is b here? 3B, What is c here? 4C. 4C, What is d here? 5D. 5D. Correct. तो विदाउट एनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिख रहा था, जहाँ पे न्यूमरेटर में 4 टर्म्स प्रेजेंट हैं, अभी न्यूमरेटर में जस्ट कितने टर्म प्रेजेंट हैं? जस्ट 1. 1. तो ये अपने आप से सिंप्लीफाई होता जा रहा है पूरा एक्सप्रेशन. यही इंपॉर्टेंस होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का. सपोज करो ये नॉलेज नहीं है आपको, तो फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और काफी सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है उसका. जस्ट दिस एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करो. हाँ, सपोज करो ये एक्सप्रेशन ऑब्जर्व नहीं होता है, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ फाइनल क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD अपॉन BC? व्हाट इज द आंसर? Sir, 1. 1 तो रॉन्ग आंसर है. Sir, 6 upon 5. 6 upon 5. करेक्ट आंसर. AD अपॉन BC, D यहाँ पे C इधर. यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD अपॉन BC इज इक्वल टू 4 into 3 अपॉन 2 into 5. 5. 2 times cancel, 3 into 2 6 upon 5. fine answer. Clear? Yes, sir. Okay. Next question. A cube plus 3AB square upon 3A square B plus B cube is equal to C cube plus 3CD square upon 3C square D plus D cube. Find out AD upon BC. Sir, A cube can be like A. Okay, ठीक है. Then 3AB square will be B. Beta, but this is, if this is A plus B, then in denominator A minus B should be there. हाँ. तो यहाँ पे कहीं माइनस साइन जैसा कुछ है क्या? बोलो. नहीं सर. सो इन दिस सिनेरियो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को कैपिटल A यूज करते हैं. एंड दिस इज लाइक कैपिटल B. This is like capital C and this is like capital D. Now this is A upon B is equal to, C upon D. next step should be this, A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon. C minus D. So A plus B is like this, A cube plus 3AB square plus 3A square B plus B cube A cube plus 3AB square plus 3A square B plus B cube upon A minus B is like this. Yeah, is like will be A cube plus 3AB square minus 3A square B minus B cube, and on the right side C cube plus 3CD square plus 3C square D plus D cube upon
c cube plus 3c d square minus 3c square d or minus d cube. Now who can observe this expression? Sir, it is like a plus b whole cube. Very good, very good, very good. Correct. This is a plus b. Whole cube. This is A minus B whole A cube. minus b whole cube. this. C plus D C whole plus d cube. whole cube. And this. C minus d whole cube. So this is like a plus b upon a minus b whole cube is equal to C plus C d plus D upon C upon minus D d whole whole cube. cube. both side whole cube cancelled, and then this is this a plus A b plus upon a b. minus b is equal to. C plus d upon C minus d. Next step, Sir, A upon B Very is good. C upon D. a upon b is equal to c upon d. So clearly ad upon bc is equal to 1. आंसर डन. तो ये था कंपोनेंट एंड Dividendo. डिविडेंड. सिंपल ही होता है, टफ बिल्कुल नहीं है इसमें कुछ भी. Yes, sir. Okay. Next point is proportion. What is proportion? Example समझते हैं ना. Example like a upon b is equal to c upon d. This can be written as a ratio b is same as C ratio D. c ratio d. This step is called as this. A, B, C, D are in Proportion. proportion. इसका मीनिंग यही होता है A, B, C, D are in proportion. This implies first two this ratio, last two this ratio, and both ratios are Equal. equal. ठीक है. एक पॉइंट और, प्रपोर्शन साइन को हम लोग दिस भी यूज करते हैं. A ratio B, this sign, this is sign of Proportion. C ratio D. D. This is nothing but A ratio B is equal to C ratio D. This is first element of this proportion, this is second element of this proportion, this is third element, and this is fourth element. जैसे like in this question यहाँ पे 2a upon 3b is equal to 4c upon 5d, यानी 2a, 3b, 4c, 5d are in proportion. In this question, A, B, C, D are in proportion. Understood? Solve this question. 2x minus 1, 5, 3x plus 4, 7 are in proportion. Then find the value of x. ये try करो.
Clearly 2x minus 1 ratio 5 is equal to 3x plus 4 ratio 7. 7, यानी 2x minus 1 upon 5 is equal to 3x plus 4 upon 7. cross multiplication 14x minus 7 is equal to 15x plus 20. 15x plus 20. Now using transposition, take 15x on the left side minus 7 on the right side, 20 plus 7 27. and 14x minus 15x. Minus 6. Minus 6. Finally x is equal to, Minus 27. correct है. ये फाइनल आंसर बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं है, सिंपल है. नेक्स्ट पॉइंट इज मीन प्रपोर्शन. What is mean proportion? If B is mean proportion of A and C, this means A ratio B is equal to B ratio. C basically होता क्या है ना, जैसे proportion के अंदर आप इन दोनों एलिमेंट को सेम क्रिएट करते हो, इफ सेम देन दिस एलिमेंट दोनों सेम ही है, इज कॉल्ड एज मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड D. D. If same, A ratio B is equal to B ratio D. D. This is called as mean proportion. So A upon B is equal to B upon C. यानी B square is equal to, AC. यानी B is equal to, Root AC. this is mean proportion. Like question है this. Find out mean proportion of 3 and 4. What will be the answer? Square root of 12 यानी 2 root 3. 2 root 3. Correct. बस इतने ही कंसेप्ट्स होते हैं इस चैप्टर में, बाकी क्वेश्चंस होते हैं कई सारे. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं तो थोड़ा नॉलेज और बिल्डअप होगा. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन दिस ट्राई करो. P ratio Q ratio R is equal to 2 ratio 3 ratio 4 and P square plus Q square minus R square is equal to 11,600. Find the value of P plus Q minus R. This is the question. देखते हैं who will give answer first. आंसर चैट बॉक्स कर लो.
Harshita, your answer is 1. No, sir, it is wrong. Options, चलो मैं options बताता हूँ आप लोगों को. Options are 15, 16, 18 and 20. P ratio, Q ratio, R is 2 ratio 3 ratio 4. P is considered, या P can be considered like 2K, Q will be 3K and R will be 4K. Now use these values in this expression. What is P square? Four K square. What is Q square? 9K square. 9K square. अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं. This is plus R square. And what is R square? 16K square. Is equal to 11,600. First find the value of K, then find the value of P, Q and R, and then find out this expression. Yeah, no need to find out the value of P, Q, R. P is 2K, Q is 3K, R is 4K. So P plus Q minus R is 2K plus 3K minus 4K. Yani just K. So find the value of K only. This is 29K square is equal to 11,600. Sir, K, is it 20? correct answer. K square is equal to 11,600 upon 29, and this can be cancelled out up by 4. 400. Correct है. K square is equal to 400. K is equal to plus minus 20. अभी यूज करते हैं 20 क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शंस नहीं है. So final answer is option. D. Correct. Try this question. X upon 2, 7 upon x, 3x upon 2, 7 upon 3 are in proportion. Find out the value of x. Sir, is my answer correct? Your answer is 3. Okay.
Can you explain this question? Yes, sir. Sir, shall I? हाँ बोलो. Sir, x upon 2 X upon 2. upon 7, 7 upon x. X upon 2 upon 7 upon x is equal to 3x upon 2 upon 7 upon 3. 3x upon 2 upon completely divided by 7 upon 3. Correct है. Next है बोलो. X multiplied by x will be there and 7 multiplied by 2. हाँ, x upon 2 basically reciprocal यानी x upon 7 is equal to on the right side 3x upon 2 into 3 upon. 7. Correct है. Next बोलो. X square upon 14 is equal to 9x upon 14. 2 7 cancel. Done. So x Yes. square is equal to 9x. mistake answer में. X is हाँ, x is equal to 3 नहीं आएगा. 3x. 3. This x cancel. So finally x is equal to x is equal to 9. 9. ये आंसर आना चाहिए. कहाँ पे मिस्टेक हुआ था इसमें? Sir, I have directly done x square is equal to 9x, so I have directly given answer 3. नहीं बेटे ऐसे थोड़ी होता है. If question is like this, x square is equal to 9, then answer will be x is equal to 3 or minus 3. लेकिन अभी ये x square is equal to 9x है ना, so 1x cancel. अगेन ये आपको बताया था उसमें रेशनल इक्वेशंस के अंदर कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज. सो इफ कैंसिल करते हैं तो लेफ्ट साइड में 0 भी लिखते हैं, लेकिन अभी x 0 हो नहीं पाएगा क्योंकि रेशियोज में 0 नंबर यूज नहीं होता है. डन. Yes, sir. हाँ, so final answer is x is equal to 9 only. Clear? Yes, sir. Next question करते हैं. Radius of a circle is 3 centimeter. Then its area is, let's say, A. Find out its area when radius is 9 centimeter. Final answer should be in terms of capital A. अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल पता है नाम लोगों को? Yes, sir. दिस इज Pi r square. pi r square. Correct. Now answer of this question.
Sir, I think it should be 9A. It should be 9A. Can you explain? So If formula if your answer is 9A, then option will be none of these. हाँ, तो none of these भी आंसर्स होते हैं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है. हाँ, एक्सप्लेन करोगे, बोलो. Yes, sir. A Formula is pi r square, so it will be 9 pi. correct है. This If is radius equation 1. is 9, then it will be 81 pi. Let's say new area is A1, then this will be pi r square, यानी pi 81, correct है. Then to find A1 will divide A1 value by A. Basically both equations are divided. Pi cancel, A upon A1 is equal to 9 upon 81, which is 1 upon. 9. Clearly A1 is equal to 9 है. या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हो ना बेटा, 481 मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 9, सो 9 है. Yes, करेक्ट है. ऑप्शन D. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If radius of a cone is tripled and height is half, then find out the percentage increment in its volume. Do you know what is the formula for volume of a cone? 1 upon 3 pi r square h. Correct. And volume of cylinder? Pi r square h. Just pi r square h. So basically volume of cylinder is 3 times the volume of Cone. cone. So basically एक सिलेंडर में से 3 कोन एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं. खैर वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है. अभी आपको दिस क्वेश्चन सॉल्व करना है. Volume is 1 upon 3 times pi r square h. Correct formula. Now height is tripled, sorry, radius is tripled and height is halved. Then what is the percentage increment in its volume? Let's say old one volume is V0 and the new volume is, let's say, V1 is equal to 1 upon 3 pi. Now R is 3R and height is h by 2, correct? And this is 1 upon 3 pi r square h into 9 by 2. This is old volume. So V1 is equal to 4.5. V0. V0. 9 upon 2 is 4.5. Percentage increment. What will be the expression? New volume minus old volume upon newer or old Old. into 100. 100. correct.
4.5 V naught minus V naught यानी 3.5 V naught upon V naught into 100. V naught cancel and the final answer is 35%. correct. So 35% increment हुआ वहाँ पे. Sir, it should be 350, right? Yes, sir. 350. V naught and now volume is 4.5 V naught. हाँ okay sorry. Basically 3 times से भी ज़्यादा हो गया ना ये 3.5 times ही हाँ ठीक है 350%. Actual में new volume is 4.5 times initial volume. Like 2 times होता है तो फिर कितना इंक्रीमेंट होता है 100% और 200%? 200%. नहीं for any value to be 2 times. Sir, तो 100% because हाँ, that बिल्कुल. value is added again. Exactly 2 times of initial value यानी इसमें 100% इंक्रीमेंट हुआ है. 3 times के लिए 200%. 200%. 4 times 300%. हाँ 5 times 400%. 4.5 times 350%. 350. Correct. Now try this question. Sir, is it 2:5? So final answer is a 2:5. थोड़ा Yes. मिस्टेक लग रहा है बेटा, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है आंसर में, थोड़ा मिस्टेक है. थोड़ा मिस्टेक है. आई थिंक लास्ट स्टेप में मिस्टेक हुआ है आपको. 2:5 और 5:2. 2:5 is 0.4 and 5:2 is 2.5. काफी डिफरेंस है दोनों में. This is basically 4x square plus 25y square minus का 20xy is equal to 0. This is square of 2x, this is square of 5y. this is like 2 first term second term.
So this question is related with completing squares, and this expression is perfect square of 2x minus 5y whole square. something square is 0, that number must be 0 क्योंकि 0 का square is 0 होता है. 2x is equal to 5y. Now x upon y is 5/2. हाँ करेक्ट है. और we can say 5:2. Clear? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, आप लोगों को लास्ट टाइम एक शीट पोस्ट किया था, आज एक शीट और करता हूँ, ट्राई करना, कंप्लीट करना, नेक्स्ट टाइम पे वो डिस्कस करेंगे. सो दिस क्वेश्चन, a solution of 30 liters of milk and water having 70% milk how many liters of water is added to the solution so that milk and water be in the ratio 3:2. काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन. ये ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं, टफ नहीं होता है इनमें कुछ. Starting milk 70% of 30 liters यानी 21 liters. ये क्लियर? वाटर क्लियरली? Nine liters. Finally, how many liters of water is added? Let's say x liter of water. So now total available water is 9 plus. Sir, answer is 3. Answer is 3. 3 liter. 3 लीटर. देखते हैं. अच्छा एक पॉइंट और, जैसे अभी x लीटर ऑफ वाटर ऐड करने पे टोटल वाटर हो गया यहाँ पे 9 plus x, एंड टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 30 और समथिंग एक्स्ट्रा. अर्केन एक्सप्लेन करोगे तुम दिस क्वेश्चन? So is it 5? 3, 5. Okay. Anyone who can explain this question? Okay, so water is 9 plus x, and milk and water is the ratio 3:2. Milk is 21, water is 9 plus x, and this ratio is given as 3/2. So 42 is equal to 27 plus 3x. 3x is equal to 15. Answer will be 5. correct. Okay, ratio chapter complete.
शीट वगैरह ट्राई कर लेना, कंप्लीट होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। ओके, मेन कंसेप्ट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो। थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो क्या होता है? ये कुछ रेशियोज इक्वल होते हैं, आप उसको के पुट करते हो, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो। ऐसा कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं होता है, जस्ट उसको के पुट करते हैं, इतना ही कंसेप्ट है। डन, चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है बेटे, उसके पहले भी कोई डाउट्स Bye, वगैरह sir. बोलना, डिस्कस करें। ओके बेटे, Thank you, sir. ओके बेटे, ओके बाय, Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day. ओके बाय।